हाय गाइस, दिस इज कोहली। सो वेलकम बैक माय चैनल रिबॉर्न स्टाइल स्टोरी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, फिर से एक नए टॉपिक के साथ आ चुका हूँ, नए वीडियो के साथ आ चुका हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक टॉपिक जो हेयर फिक्सिंग के बारे में है। बहुत से लोग मेरे को सवाल करते हैं, पॉलीलेस हेयर फिक्सिंग, इंजेक्टेड लेस हेयर फिक्सिंग क्या क्या होता है और कैसे होता है। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ पॉलीलेस इंजेक्टेड हेयर स्किन लेस कैसे फिक्सिंग होता है, क्या होता है, तो उसके बारे में बताऊंगा। आज मैं कुछ नया टेक्नोलॉजी का हेयर फिक्सिंग किया हूँ जो पॉलीलेस का होता है, जो अल्ट्रा ग्लू के साथ और वॉश ऑन के साथ नया टेक्नोलॉजी तरीके से मैं किया हूँ। तो आपको मैं पूरा वीडियो दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा सारा प्रोसेस कैसे रहता है और क्या होता है, इंजेक्टेड लेस क्या कैसे चलता है, कैसे यूज करते हैं इसको, मैं पूरा बता दूंगा आपको। आप वीडियो को आखिर तक देखिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, प्रेस कर दिए बेल आइकन बटन को, ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, फिर से मिलते हैं। When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up.
सो गाइस, जैसा कि देखा आपने इंजेक्टेड लेस स्किन जो होता है पॉलीलेस हेयर फिक्सिंग, अभी मैं आपको वीडियो पे दिखाया है कैसे होता है। तो ऐसा वो स्किन ही आता है हेयर फिक्सिंग के बाद, काफ़ी नेचुरल लुक आता है इस पे। तो इसका जो टाइमिंग रहता है वो 4 से 5 मंथ, अगर थिन पॉलीलेस है तो ऐसा चलता है, अगर थिक पॉलीलेस है तो एटलीस्ट 6 मंथ क्लाइंट यूज कर सकता है ग्लू पे। ये मोस्टली ग्लू में, गॉश पॉन्ड में और अल्ट्राहोल ग्लू पे लगता है, तो इतना दिन चलता है। तो मोस्टली क्लाइंट जो रहते हैं नेचुरल, जिनको ज़्यादा इनविजिबिलिटी चाहिए, ज़्यादा ही चाहिए, वो ये वाला जो सिस्टम है यूज करते हैं। तो आपको अगर चाहिए तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उधर जाके विजिट करके हेयर फिक्सिंग सेंटर पे आप अपना पॉलीलेस इंजेक्टेड लेस हेयर फिक्सिंग करवा सकते हो। अगर आपको लेस हेयर फिक्सिंग चाहिए तो उधर भी कर सकते हो आप। अगर पीयू बेस हेयर फिक्सिंग भी करना चाहते हो उधर भी कर सकते हो। अब नॉन सर्जिकल हेयर फिक्सिंग कोई सा भी चाहते हो तो उधर जाके कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं, मैं आपको अगले वीडियो पे मिलूंगा। तो तब तक दुआ में याद रखिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन बटन को, सब्सक्राइब कर दीजिए।